Good morning, everyone. Welcome to this daily live market analysis brought to you by Upstox. My name is Amit Goel, and I'm a CMT and a SEBI registered RA, and I shall be leading this session for you. हम लोग हर सुबह मिलते हैं जिस दिन मार्केट चालू होता है सुबह 8:45 पे 1 घंटे के लिए, जिसमें हम मार्केट की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस स्टैंड पॉइंट। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, डेरिवेटिव डेटा को रीड करते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में भी एक नजर रखते हैं, ताकि हमारा एक होलसम व्यू बन सके कि मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और उस प्रकार से हम अपनी ट्रेडिंग किस तरह से सुधार सकते हैं। सो यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग मार्केट के लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, डेरिवेटिव डेटा, ओआई बिल्डअप के बारे में रोज सीखते हैं ताकि हम लोगों की मार्केट की समझ बेटर हो। ऑल राइट, कई लोग हैं जो इस सेशन में रोज बने रहते हैं एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो प्रैक्टिस है, हम लोग ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखेंगे, जिसमें हम यूएस, एशियन एंड कमोडिटीज पे ध्यान रखते हैं। तो लेट अस गो टू दैट चार्ट। S&P 500 का कल का हैंडओवर क्या था? इफ यू कैन सी, S&P 500 जो है हम लोगों के आइडेंटिफाइड सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता हुआ कल एक माइल्ड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी नहीं बोलूंगा, मतलब एक लोअर लो तो बनाया है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, इट हैज मेड अ लोअर लो ओवर हियर। Okay, it has made a lower low but has given a positive close. All right, so mixed signals hai. However, this support is holding. Okay, so S&P 500 US markets support is holding. We are at the lows and market में थोड़ा सा प्रेशर है डाउनवर्ड साइड में। ये हमारा असेसमेंट हो गया ऑफ S&P 500। सपोर्ट पे अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। ये बड़े विक के कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि नीचे में अराउंड 6780 700 के पास मार्केट जो है उसको गिरने नहीं देना चाहता एंड वहां पे सपोर्ट बना हुआ है। हमारा ब्रॉडर टर्म सपोर्ट जो है वो 6720 के पास है, और अगर मार्केट में वीकनेस रही तो शायद ये सपोर्ट लेवल भी टेस्ट कर सकता है। ये हुआ S&P 500। सो 7000 continues to be the resistance and an aspirational level to achieve. नैस्डैक देखें तो नैस्डैक भी उस एक आइडेंटिफाइड सपोर्ट लेवल के पास है। ऑल राइट, एंड ये काफी एक लंबा ट्रेंड लाइन है जिसको वो अभी भी मैग्नेट की तरह पकड़ा हुआ है। द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, राइट, उसके नीचे ही चल रहा है S&P 500 एंड नैस्डैक। सो द नियर टर्म ट्रेंड इज वीक बट वी आर एट द सपोर्ट लेवल्स। तो मैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एंड क्योंकि हम लोगों ने एक नया लो यहाँ पर बनाया है, आई मार्क दिस एज अ डिमांड जोन। ऑलराइट, तो वी हैव नाउ क्रिएटेड अ न्यू लो इवन इन नैस्डैक। डाउ जोन्स जो तीनों इंडाइसेस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, अब उसका सपोर्ट जो है इज एट 49,000 एंड द रेजिस्टेंस इज एट 50,500। वी आर अगेन नियर द सपोर्ट लेवल। एक ब्रेकआउट दिया था काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, but that breakout has turned to a false breakout and we are now back to the breakout level. क्या ये यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा is something that we have to watch out for. The broader trend, अगर ये ब्रेकआउट का जो लेवल है इसको निगेट करता है 48,400 लेवल्स। मिड कैप इंडेक्स वहां का देखते हैं, इट अगेन कंटिन्यूज टू बी इन अ ब्रॉड रेंज एंड ऊपर नीचे ही कर रहा है। इट इज दो द ब्रॉडर ट्रेंड इज अप, it is still in a sideways range.
तो यूएस मार्केट का जो हैंडओवर है इज मिक्स्ड, इज फ्लैट, एंड वी आर एट द सपोर्ट लेवल्स इन द यूएस। एशियन मार्केट का ओपनिंग देखते हैं। एशियन मार्केट 3-4 दिन से गिर रहा था। निकेई जो है आज एक काफी अच्छे मूव के साथ ऊपर की तरफ मूव होता दिख रहा है। ऑल राइट। एंड हैंगसेंग जो है कल छुट्टी थी, तो आज देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट लेवल के पास है। ऑलराइट, ये एक सपोर्ट लेवल के पास से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग यूएस मार्केट्स आर नियर द सपोर्ट विद सम वीकनेस। एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें, अपार्ट फ्रॉम निकेई काफी बहुत थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है इन चाइनीज मार्केट एंड हांगकांग मार्केट। सो मिक्स्ड सिग्नल्स इन द लार्जर कंट्रीज जैसे यूएस, जहां से हमको मेजर ग्लोबल सिग्नल्स मिलते हैं। नाउ लेट अस लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जो है एक हमारा आइडेंटिफाइड एक लेवल था सपोर्ट का, उसको तोड़ते हुए उसने एक नया मतलब इट हैज क्रिएटेड अ न्यू लो। इट हैज नॉट क्रिएटेड अ यस इट हैज क्रिएटेड अ न्यू लो यस्टरडे ऑफ $4,854, एंड वहां से वो अभी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गोल्ड अगर आप देखें तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज को पकड़ा हुआ है। इफ इट ब्रेक्स हियर, देन द शॉर्ट टर्म और द नियर टर्म ट्रेंड बिकम्स नेगेटिव। इट इज एट अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल। सिल्वर जो है इट इज अ वीकर ऑफ द टू लॉट्स, एंड पिछला जो सपोर्ट हम लोगों ने 71 का मार्क के किया था, उसके आसपास आकर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखिए मूविंग एवरेज के अच्छे खासे नीचे के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड इज एट अ सपोर्ट लेवल, सिल्वर इज वीकर। यूएस मार्केट में वीकनेस है, हैंडओवर इज ऑल्सो मिक्स्ड। तो क्या हमारा मार्केट कल के एक उछाल, परसों के उछाल को कंटिन्यू रख सकता है कि नहीं, इज समथिंग दैट वी नीड टू वॉच। फाइनल थिंग इज दैट वी सी इज क्रूड। क्रूड में भी हल्का सा वीकनेस है, बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग इन दैट ब्रॉड रेंज। तो जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है वी आर ओके। अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इंडियन इंपोर्ट्स के लिए अच्छा है, हमारे लिए ये नीचे का लेवल ब्रेक करना अच्छा है। सॉफ्टर क्रूड इज गुड फॉर द इंडियन इंपोर्ट्स, एंड इफ इट क्रॉसेस $66, ये हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी जो है एक अच्छे 51 पॉइंट्स के अपमूव के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। नाउ we will close this for the time being, and हम लोग अपने चार्ट्स पे जाते हैं। कल के मैं एफ आई आई डी आई का भी डेटा नोट कर लिया था। तो एफ आई आई ने कल जो है $995 995 crores की बाइंग की है कैश मार्केट में, एंड डी आई आई ऑल्सो हैव परचेज 187। बट अगर आप देखें एफ आई आई टिल 12th of February were net buyers in the month of February by $6,000, 6,000 rupees। 13th February को एक मैसिव सेल ऑफ आया, and now if you notice February month is negative again for FIIs। 1,352 crores से उन्होंने नेट सेलिंग कर दी है। सो FIIs कंटिन्यू टू सेल। दो अगर आप फेब्रुवरी का फिगर्स देखें, इट इज क्वाइट मिक्स्ड। कुछ बहुत पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स ऑफ 5,000 2,000 क्रोर्स के, एंड कुछ एक आध बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी दिख रही है ऑफ अबाउट 7,400 एंड 2,000 क्रोर्स के आसपास। सो नेट सेलर्स हैं FIIs, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज until and unless FIIs become net buyers, ब्रॉड मार्केट में मोमेंटम का पार्टिसिपेशन आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ट्रेंड एनालिसिस जो हम लोग करते थे, विच इज बेसिकली चेकिंग वेदर द निफ्टी करंट मार्केट प्राइस इज अबाउ द 5 पीरियड SMA और नॉट। इट इज अ वेरी नियर टर्म ट्रेंड। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है टू अंडरस्टैंड वेदर निफ्टी का जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ 5 पीरियड मूविंग एवरेज, इज बेरिश और बुलिश। सो पिछले 4 दिनों से वो ट्रेंड स्टिल बेरिश एज पर द 5 EMA SMA। Bank Nifty on the other hand has turned bullish। डेली ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स,
flat handover, softness in commodities, major indices near supports, right? फ्लैट यूएस हैंडओवर है, हमको यूएस हैंडओवर लिखना रहेगा, फ्लैट यूएस हैंडओवर एंड softness in commodities and major indices near support levels, right? ये हमारा असेसमेंट होता है ग्लोबल मार्केट्स के बारे में. Now there are a couple of questions before we move ahead. Let me just check them. Matthew George says, sir, your classes are attending people's may from all sides of India, so both English and Hindi will be good. ठीक है मैथ्यू, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों ही बात करता हूँ, बट मुझे ये फीडबैक मिला है. I have got this feedback that majority of the viewers prefer Hindi, so I tend to speak more in Hindi, but I will try and speak in Hindi as well as in English, kind of a Hinglish combination. Now, Hari Singh has a question. Hello, sir. Looks like strong resistance between 25,750, 25,800 and support at 25,650 and 700. Is it indicating a sideways trend for today? Let us check that, Hari. Good observation. FII ने कैश में किस स्क्रिप्ट में पैसा लगाया है, ये कैसे पता चल सकता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये, बिकॉज दे डोंट ओपन देयर ट्रेड लॉग्स एंड शो इट टू अस. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज पब्लिश्ड पब्लिकली, ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है. बट अगर आप FII का मतलब यू विल हैव टू आपको, मेरे ख्याल से दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट अगर हर स्टॉक का हम कैश में बाइंग सेलिंग देखें, कितना टर्नओवर हो रहा है, एंड उसको हम देखें कि क्या ट्रेंड आ रहा है. अगर प्राइस उसकी नीचे की तरफ है एंड उसमें सेलिंग आ रही है, डिलीवरीज कम है, राइट, बट उसमें टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, राइट. कैश मार्केट में अगर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेजेस नीचे की तरफ हैं एंड प्राइस जो है फ्लैट टू नेगेटिव है, तो हम शायद इस तरह से एक अनुमान लगा सकते हैं कि उन स्टॉक्स में देयर इज सम FII selling, and essentially these FIIs are focused more on the large and mid cap counters because वहीं पे liquidity मिलती है. Now, Carnival of Rust, hello Miji, is there any tool for indicator which could tell us when retail participation in equity has dried up or if retail has lost interest? I don't think so. There is any tool or an indicator like this, but I think instead of understanding or classifying the momentum or interest in a stock from a retail or an FII or a pro or a client perspective, one can simply broadly look at the volume figures and delivery figures, percentage of delivery. So if the prices are moving up, or in a falling market, if the prices are holding in a range, that shows relative strength. मतलब क्या है? What I am trying to mean is this. So let's say the index is falling. Okay. All right. Now, if there is a stock which is in a range, okay. So if the broad indices are weak or falling, and a particular stock is maintaining a range, this shows relative strength. ओके, ये प्राइस एक्शन से हमको मालूम पड़ता है कि ये स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है. सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ बेसिंग, नैरो रेंज में बेस कर रहा है. दिस इज पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड, look at the delivery percentage. If the delivery percentage is increasing in this stock, okay, that means there is an accumulation happening in this stock, correct? So अगर stock range कर रहा है, delivery percentage is slightly moving up,
That means there is an accumulation, there is relative strength in this counter. So what will happen is tomorrow when the market, eventually when the market, starts to move up, this will blast. Right? Because it was just waiting for the overall broader strength to come. तो यहाँ पर जो है, then you will have a very strong participation and this will give a clean breakout. So this is how you will cross-check relative strength in a particular stock. Look at a couple of other matrices and then take an estimated guess. Correct? All right. Now let's move on. So रजनीकांत राठौड़ साहब से, अरे सर गुरुजी और जी मत बोलो, सिंपल अमित बोलो यार, मैं भी आपके जैसा ही एक मार्केट का स्टूडेंट हूँ. ठीक है. ईटीएफ के बारे में थोड़ा बताइएगा और हर सेक्टर के ईटीएफ के नाम भी बताइएगा. धन्यवाद आपका. राठौड़ साहब, ईटीएफ्स के बारे में मुझे लगता है कि एक पूरा सेशन, एक सीरीज करना चाहिए हमको, बिकॉज ईटीएफ्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस वन कैन लुक एट. ठीक है. सारे ईटीएफ्स के नाम, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं मैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नाम चाहिए तो वो मैं आपको एनएससी के वेबसाइट का लिंक दे देता हूं, आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं ईटीएफ के लिंक्स. आप अगर यहाँ पे मार्केट डेटा में जाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स करेंगे, आपको सारे के सारे ईटीएफ्स यहाँ पर मिल जाएंगे. राइट, आपको सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यहाँ पर मिल जाएंगे और उनमें किसमें कहां पर काम हो रहा है वो भी डेली वैल्यू में मिल जाता है आपको. ठीक है. अगर आप देखें कल का जो एक ट्रेडिंग टर्नओवर था, सिल्वर बीज में 2000 करोड़ की खरीदारी आई, गोल्ड बीज में 700 करोड़ की खरीदारी आई. दिस इज अ पर्टिकुलर कंपनी. टोटल सिल्वर में और टोटल गोल्ड में कितना आया है आपको उनको सेग्रीगेट करके पता करना है, बट यू विल गेट ऑल द ईटीएफ्स लिस्टेड हियर. ऑलराइट, तो ये आप यहां से निकाल सकते हैं और उनका अंडरलाइंग जो पैसिव इंडाइसेस है जिसको वो ट्रैक करते हैं वो भी आपको यहां पर दिख जाएगा. ऑलराइट, now let's go and check out what is the opening trend. The opening ticks are showing mild positive, about 0.15 or 0.3% positive. It is 0.3%. So एक पॉजिटिव टिक के साथ मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है. Astral chart we will check later on. In the meantime, let us first look at the broad indices. Is this session being recorded? This session is going to be always available on YouTube channel of Upstox. You can always check it out later on as well. All right, now let us go to the Nifty chart, and I think I will take you to the trading view. मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ. Okay, from here we will look at the Nifty chart. Now this is your broad Nifty. This is your Nifty, and what I have done is on our platform, once you go to the trading view platform from Upstox, which is available here, okay, what you can do is you can go and activate a lot of features in this. It is a very feature rich system. So you have this OI profile which comes directly onto your chart, which tells you कि सबसे ज्यादा call writing, put writing कहाँ पर है. Correct? So you can even increase the shading. आपको डार्क करना है, लाइट करना है, कैसे करना है आप उसको भी कर सकते हो. All right, so you can change the color coding as well. Okay, so now this gives you the OI profile of the market, and right now what I will do is I will just hide it a little so that we can focus on the broad chart itself. Now this is where what we are relying on, the 30th June top, which is 25,669. So we are still around this level. Yesterday, a day before yesterday, there was a bullish engulf, and yesterday the market closed with a 42 point gain,
and we are now close to what was yesterday's closing? 725. We expected that during the close of our interactive session, max pain stood at 25,600 and the highest OI stood at 25,600 on the call side, right? That must have moved up during the day, and now we have closed at 25,725 in the interim period. Can this be a near-term resistance for the market? Can 25,755 or 25,900 be a resistance for the market is something that we will have to check. But broadly speaking, if I were to look at the market on a daily time frame, this is what I see. Okay, this is what I see. So what I have done is I have marked the support, I have marked the resistance as per the broad range of the market. So the support stands at 25,372 and the resistance for the market broadly speaking stands at 26,009. ठीक है, ये इस मार्केट के निफ्टी का जो है ये ब्रॉड रेंज समझ में आ रहा है लुकिंग एट द चार्ट. इट इज अ विजुअल कॉन्फर्मेशन. फिर मैंने क्या किया, इस रेंज को नापा, इस रेंज को फिबोनाची टूल से मैंने नापा. हाउ डिड आई डू दैट? लेट मी जस्ट शो यू द फिबोनाची टूल and this is what I have done. I have done is this 0, 1 and 0.5 मतलब एक range 0 to 1 and उसका आधा. So I have sliced it into half, right? And I have made some other changes also which you can just see here so that the numbers are visible. Okay, so which is 26,009, 25,372, the top and bottom, the floor and ceiling, and the midpoint of that is 25,691. ओके, तो राउंड नंबर बात करें तो 25,400 के आसपास सपोर्ट है, 26,000 का रेजिस्टेंस है. सो वी आर डीलिंग इन वी आर ट्रेडिंग और वी आर इन द सेंटर ऑफ अ 600 पॉइंट रेंज. ठीक है, जिसका मिड पॉइंट इज अराउंड 25,700. ठीक है, सो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो एंड आपको दिखता है कि मार्केट इस रेंज को इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, इफ इट snakes around this. So if the market, right, if the market ranges between these levels like this, if the market ranges in this sort of a fashion for the next 2-3 sessions, okay, then it will be a good opportunity for you to consider a non-directional setup. Okay, a 600 point non-directional setup. It could be for next week, it could be for the week after the next week. Correct? Something on a option. इसमें strategy क्या कर सकते हैं? Strangle या iron condor. Okay, so if the market snakes between these two lines और ये रेंज को तोड़ता हुआ नहीं दिखता है तो आपके लिए एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी फॉर द वीकली एक्सपायरीज सोच सकते हैं. Again, no trade recommendations or anything, but this is how the market can be read. Okay, and अगर आप देखें ये broadly speaking for monthly expiries 26,300, 26,400 यहाँ पर and 24,571, right? So these are your monthly ranges, budget low and the all-time high. उसके बीच में भी प्राइस है, correct? Now if I were to mark these two levels as well, अगर मैं यहां से यहां तक भी लेके आता हूं प्राइस तो मेरा सेंटर पॉइंट कहां बनता है? मेरा सेंटर पॉइंट बनता है 25,500, correct? So my next assessment for a monthly iron condor or a strategy is अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है which is 25,500, right? So we can identify multiple strategies using our chart analysis, price analysis and identifying the broad range. क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है. फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इट इज इन अ साइडवेज रेंज. साइडवेज रेंज में मार्केट can give us opportunities to set up non-directional option strategies, okay, on multiple expiries. छोटा रेंज है
वहां पर आप वीकली एक्सपायरीज या बाई वीकली एक्सपायरीज का सोच सकते हैं। ब्रॉडर रेंज आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप वहां पर मंथली एक्सपायरीज का प्लान कर सकते हैं। अगेन रिस्क रिवॉर्ड वगैरह के बारे में किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उसके लिए कई सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं ऑन आवर अपलर्न प्लेटफॉर्म। एंड जनवरी मंथ में मैंने भी एक सीरीज किया था जो मंडे सीरीज होता है, जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया था। सो यू कैन प्रोबेबली, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन चेक देम आउट। नाउ मार्केट जो है ब्रॉडली स्पीकिंग इस रेंज में है। लेट अस सी वेयर द मार्केट्स आर ओपनिंग। 27 पॉइंट्स पॉजिटिव, सेंसेक्स 100 पॉइंट्स पॉजिटिव, विच इज, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें 0.10 मतलब 0.1% पॉजिटिव के आसपास खुल रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब अराउंड माइल्ड गैप अप with a 0.1% positive open. Ab, we will see whether we are opening at a resistance point or not. Now market is opening at 25,752. Let us go to the option chain to mark where we are. Now option chain जो है 26,000, 24th February the monthly expiry का बताएगा, which is next Tuesday. 26,000 is the strongest call OI and 25,500 ये हम चार्ट पे मार्क कर लेते हैं. Let us draw a couple of more lines. Okay, and let me mark it in red. Highest call OI at 26,000. Coordinates 26,000. Line style is this. टेक्स्ट जो है मिडिल है, इसको हम टॉप करते हैं, लेफ्ट या राइट. ओके, highest call OI, maybe I will just keep it like this. Style of the line, probably I'll make it into a dot with the thickness. ठीक है, हाँ थोड़ा ये अलग कर लेते हैं ताकि हमको मालूम रहे. I'll just clone this and इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं and इसको भी ग्रीन. Highest put OI at 25,500. Coordinate 25,500. All right. Now, so what we have done is we have marked certain levels from a derivative data standpoint. Highest call OI कहाँ है, highest put OI कहाँ पर है. Okay. हमारे लेवल्स कहां पर हैं फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव. रेजिस्टेंस पे अगर आप देखें, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस एट द रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट. हाईएस्ट call OI and price action, right? So there is a confluence of resistance. Right? तो यहां पर what my understanding is from a little bit of experience, कि whenever there is a confluence of levels from derivative data perspective, from price action, from indicators, it acts as a strong level. It could be a confluence of support, it could be a confluence of resistance, right? तो यहाँ पर price action के हिसाब से you do not have a very strong support confluence, you have it scattered, मतलब 500 और 400 के बीच में है. It's more like a range of support. Okay, but यहाँ पर 26,000 can act as a very strong resistance. So what I feel is whenever the market comes at the support level, at the resistance level, there could be some bit of fight from the bears. Okay, and if they lose that fight, then we will clearly get a breakout and punch a new all-time high. ठीक है, so ये बहुत interesting point of observation होगा till such time the market can move in a range.
चलिए प्री मार्केट मार्केट ओपन हो गया है एंड वी विल गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू ऑब्जर्व कि मार्केट क्या करना चाहता है. In the meantime, I'll read the questions that you may have or the points that you have made. So market open होते ही let me put up Nifty. मिड कैप 150. आई थिंक मेरा सिस्टम थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रखा है. मिड कैप 150, small cap 250. Let me add these. I'll import the entire index list here so that it will become easier for us to do the analysis every day. All right, anyways, let's just stick to this. These are our Nifty, Bank, Nifty, Sensex, and mid cap. Okay. Now, this is our midpoint, which is 25,691. From that smaller जो identify किया था range. मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट थोड़ा सा अभी भी साइडवेज ही है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है. जो ये कल का एक टॉप था, ओके, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, कल का जो ये एक टॉप था, मार्केट जो है इस टॉप को अभी तक ब्रेक नहीं किया है. ओके, एंड नियर टर्म रेजिस्टेंस इज अराउंड फ्रॉम अ इंट्राडे पर्सपेक्टिव 25,664 669 वहां पर. सो फिलहाल के लिए 764 इज अ टॉप फॉर द मार्केट, एंड वंस वी गेट अ ब्रेक फ्रॉम हियर देन द मार्केट कैन मूव अप. In the meantime, let me just check the questions. Market का first few minutes चलने दीजिए. अपस्टॉक्स में स्क्रीनर में ओपन इज इक्वल टू लो होता है, वो सब कैसे ट्रैक करने का प्लीज बताएं. अपस्टॉक्स में ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो मेरे ख्याल से मोबाइल पे आता है. इधर वेबसाइट पे शायद नहीं दिखता है. आई विल ट्राई एंड सी हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल. ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है. मिड कैप निफ्टी में खासकर स्ट्रेंथ दिख रहा है. इट इज मूविंग अप वेरी स्मार्टली. तो यहाँ पर मिड कैप में आपको बाइंग दिख रही है. ब्रॉडर इंडाइसेस में भी हल्की फुल्की बाइंग दिख रही है, नॉट मच, बट मिड कैप में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है. एंड मिड कैप इज पंचिंग अ न्यू हाई. सो द ब्रॉडर ट्रेंड में बाइंग आती हुई दिख रही है. How to remove my bias regarding my preconceived notions on company in trading. Example, when I get a long setup in RBL bank, I do not take it because I don't like RBL stock. So I think this is something which a lot of us face कि मुझे अगर आइडिया में कोई ऑप्शन दिखता है, या मेरे को मजा नहीं आता उसमें. आई थिंक दैट आइडिया मतलब नहीं है स्टॉक लेके, है ना. तो बट इफ यू आर अ ट्रेडर, चार्ट इज अ चार्ट, राइट. अभी मेरे को बीच में क्या हुआ था, STL टेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी एक सेटअप आया. आई एंड उसके बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बारे में कुछ ना कुछ सम नेगेटिव कॉनोटेशंस थे, नेगेटिव माइंडसेट था मेरा. एंड मैंने सोचा कि यार ये कंपनी मतलब corporate governance में issue है and all that. So I did not like Sterlite Technologies as you do not like RBL Bank. But I still said कि यार सेटअप है, मेरा स्टॉप लॉस मेरी जगह पे है. अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं निकल जाऊंगा, एंड अगर मिलता है प्रॉफिट तो मैं ले लूंगा, राइट. सो आई काइंड ऑफ ट्राई टू ओवरकम दैट, एंड मैं बोला भाई अगर मेरे को सेटअप अच्छा दिख रहा है तो मैं उसको ट्रेड करूंगा. मैंने ट्रेड लिया, एंड उसमें इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स इन द रिसेंट पास्ट. काफी अच्छा मूव आया था उसमें, इन विच यू कुड मेक सम गुड गेन्स. तो आई थिंक थोड़ा सा यू हैव टू ओवरकम द बायस कि ये स्टॉक अच्छा है कि बुरा है, और यू सिंपली क्रिएट अ वॉच लिस्ट, ओके, ऑफ द स्टॉक्स दैट यू लाइक एंड ओनली ट्रेड इन देम.
that will also be easier for you. I will trade only in, let's say, X number of stocks, X type of stocks, and you might have filtrations in terms of, I will trade only in profitable stocks, profitable companies. तो आप स्क्रीनर्स पे जाके या ट्रेंड लाइन पे या कहीं पर भी जाके आप एक लिस्ट बना लो ऑफ दोज कंपनीज विच आर प्रॉफिटेबल in the last 1 year, last quarter, so on and so forth. And you create a watch list of that, or you create a watch list as per, stocks which are only Nifty 500, NSE 500, right? Or you will have a market cap का एक criteria, sector का criteria, theme का. So there are a lot of ways you can do it. But as a technical guy, you will simply look at the setup. अगर आपको setup में breakout, pullback या range दिखता है, you will trade that. You should trade that. ठीक है? You don't need too many stocks also to trade. If you can, trade only one or two underlyings, even that is good enough. But then you will have to go deep into it. You will have to leverage and trade a lot in that particular underlying. जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ निफ्टी, कुछ लोग हैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं. They don't trade anything else. तो वो भी एक तरीका होता है. कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं एंड सिर्फ एक चार्ट पे रिलाई करते हैं. आई लाइक टू स्प्रेड आउट बिटवीन 5 and 10 open positions at a time. Not too many, not too less. तो एक छोटा सा concentration या छोटा सा diversification, whatever you want to call it. Right. Now, let us see. We have, as is our practice, we leave the first 5 minutes on the charts for the markets to, give us some directional bias. अभी देखो मार्केट ने ऑन निफ्टी हायर हाई हायर लोज बना रहा है, राइट, ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम विच इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम. अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे आप? ये जो एक छोटा सा अप मूव आ रहा है, until and unless this trend line is, intact and the market breaks this 25,764, that is when your trade gets activated, क्योंकि वहां पर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है, right? But provided we sustain this small up move and give a breakout. However, अगर आप अभी देखें मार्केट में वीकनेस आती हुई दिख रही है. मार्केट्स आर नाउ नेगेटिव. Sensex is negative, Nifty is negative, and we will check out the open interest data. How is that building up? First and foremost, पहले open interest देख लेते हैं. So today is the first day for this new series. 24 फरवरी का आज पहला दिन है. वो 24 फरवरी एक्सपायरी का आज पहला दिन है. तो यहाँ पर data is still populating, still building. Okay, so what we can see initially is 26,000 is the strongest resistance and 25,500 is the strongest support. तो ये 500 पॉइंट का एक रेंज बनता दिख रहा है, which coincides with our analysis also of the market. करेक्ट? अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं या इवन 75 मिनट्स फॉर दैट मैटर, कोई भी टाइम फ्रेम पे भी आप जाके देखोगे तो आपको एक ये 26,000 एंड 25,400 या 500 का एक ब्रॉड रेंज बनता दिख रहा है मार्केट में. एंड द जून 2025 का जो लेवल है दैट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट. करेक्ट? इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट. तो the analysis and the inference in the market is it could be range bound between 26,000 25,372. Correct? Short term trend is sideways again. Support 25,372, 26,000 is the resistance, 25,500 and 26,000. PCR would be 0.94. Right? So we are looking at so what was our analysis yesterday? Is it a change in stance? क्या हम लोग bullish हो गए मार्केट में on account of the bullish engulf? The answer was unlikely given the noise on the charts and it could be a choppy session. Correct? हमारा assessment क्या है?
मार्केट में कोई क्लियर कट रेंज अभी भी है नहीं. इट इज लाइकली टू बी अ साइडवेज सॉर्ट ऑफ अ मार्केट. करेक्ट. So right now 25,750, 764 is the near term resistance and the support is around 25,669. ठीक है. सो ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, या 600 भी ले लीजिए. 644 एंड 764. तो रफली अबाउट 100 पॉइंट नैरो रेंज है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, which is let's say on a 5-minute time frame. This could be our broad range. Correct. This could be our broad range here. This is the nearest pivot, which is 25,660, and the nearest resistance is 764. तो उस रेंज के अंदर मार्केट इंट्राडे में है. तो you could be in a sideways sort of a trajectory. In the meantime, let me also check Sensex, जिसकी एक्सपायरी परसों होने वाली है. I guess the assessment for Sensex as well as Nifty remains the same. So the nearest resistance for Sensex is 84,484 and the support is at this flip zone 82,000 और 83,000. ठीक है. यहाँ पर भी एक मैं बोल सकता हूँ एक रेजिस्टेंस है नियर दिस गैप लेवल विच इज 84,000. सो 83 एंड 84,000 के बीच में सेंसेक्स मंडरा रहा है. एंड आई थिंक द वाई ऑल्सो विल give the same answer. 83,500 is the highest resistance and 83,000 is the highest support. Okay, and 84,000 also. I think the broader range is 83 and 84,000 in Sensex. So let us just note this. Broader range is 83,000 and 84,000. This is also sideways. Now, what we will do next is we will go and check out the indices. Which indices are doing well? Let us sort this by change. जैसे मैं हमेशा करता हूँ. So the indices are all classified as broad indices, market cap के हिसाब से, sector indices, thematic indices and strategic indices. ठीक है. These are factor based indices, quality, low value, momentum, so on and so forth. ठीक है. तो broad based indices देखते हैं. They're all positive and सबसे ज्यादा strength जो है वो ब्रॉडर मार्केट में दिख रही है, विच इज माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप. माइक्रो, स्मॉल एंड मिड कैप में बाइंग आ रही है, विच इज अ गुड साइन. द ब्रॉडर मार्केट इफ इट शोज स्ट्रेंथ, इट इज ऑलवेज अ गुड साइन फॉर द मार्केट. क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर बाइंग हो रही है तो वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता दिखता है. सो यहाँ पर सस्टेन करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. The trend is definitely down. However, recently अगर आप देखो for the past few trading sessions, the mid cap Nifty or sorry the micro cap Nifty has managed to stay above the 21 moving period moving average. तो पिछले एक महीने के एवरेज प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. So there is a positive momentum in the market for micro cap. So is the case with small cap, and mid cap is also showing a similar sort of a trajectory. See, देखो broader trend in all these three, micro cap, small cap, mid cap, is still weak. ठीक है. But these are the initial signs of possible recoveries in these broader market. क्योंकि अगर यहाँ पर broader market में हमको बाइंग आएगी, हमको ट्रेंड चेंज होता दिखेगा, तो हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं इंडिविजुअली, जिसमें स्मॉल एंड मिड एंड माइक्रो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है आम उम्र, we will start seeing betterment in our portfolios. Now let us also go to the sectoral indices. Metal जो कल weakness दिखा रहा था, it is now showing a little bit of a strength today. Financial services, PSU banks continue to
ride this rally. Very strong momentum in PSU banks. It continues. Let us see whether there is any negative divergence. Okay. Now, can you see this? Correct. So there is a negative divergence appearing on the PSU index. Does this mean that there is going to be a fall in the PSU banks? The answer is no. There is a lot of strength, there is a lot of momentum in the PSU banks. However, a negative divergence is a pointer towards what? It will simply tell you that the market can come and do a mean reversion setup, which is it can come to the mean here. Once it comes to the mean and basis here, which is around 9,000 levels, it could be a good level for joining the rally. It could be a pullback trade in a strong momentum. ओके तो डाइवर्जेंसेस क्योंकि आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है तो यू हैव टू कीप एन आई आउट कि अगर वो मीन पे या तो लोअर बैंड पे दैट इज 9,000 और 8,500 उसके आसपास अगर बेस करता है दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू जॉइन द रैली इन पीएसयू बैंक्स. आईटी में कल एक अच्छा खासा पुलबैक आया था, राइट, बट देन इट हैज गिवन अप बिकॉज इफ यू लुक एट द आईटी इंडेक्स आफ्टर इट क्लाइम्ड अप, इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ सेल ऑन राइज क्योंकि ये जो 75 मिनट का मूविंग एवरेज है उसको ये टच करता है और नीचे की तरफ जाता है. सो इट इज शोइंग अ नेगेटिव बायस अगेन. So will the IT rally fade out? From a higher term perspective, as we have already discussed, in IT, 31,000, this triple bottom level is very, very crucial. अगर ये टूटता है, then we are headed lower, right? So until and unless we see proper signs of reversal, and this is the weekly time frame का chart, until and unless we see a proper reversal on the chart on this time frame, it is very difficult to call out and say कि IT has bottomed out. Very difficult to say. Okay, let me just see what more questions we have. All right. There are a few requests to scan some charts, some stocks. So Zlon, Astral. I will take one by one. But again, as I have said, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होगा. ब्रॉड ट्रेंड, ब्रॉड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बात कर सकते हैं. थीमेटिक इंडाइसेस में देखते हैं. सो मार्केट इज चॉपी, राइट. एक दिन एकदम नीचे था, विच इज योर कैपिटल मार्केट इंडेक्स. ठीक है, एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया, फिर अभी वापस ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर हम लोगों ने देखा है, इफ यू रिमेंबर कैपिटल मार्केट इंडेक्स, व्हाट डिड वी से? वी आर सीइंग अ megaphone, correct? We are seeing a megaphone sort of a formation, and I will make a note of this so that we are aware of what we have done. Widening pattern, correct? So what we are witnessing in capital markets is it is creating a higher high, and it is also giving very, very volatile moves on both the sides. Which are the themes which are working well? Railway, PSU, and defense. India defense sideways here. There is no clear-cut direction in these indices. Now let me check
Sensex, will it rise by this month end? So Sensex and Nifty, if you notice, we have identified a couple of levels which need to be broken convincingly, which is 84,000 and 84,500, for it to convincingly give a clean upward move till the new all-time high, which is 86,159. तो यहाँ पर 84 एंड 84,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं, जिसके कारण सेंसेक्स में क्लियर अपमूव आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, कोई एक्सटर्नल न्यूज आ जाती है कोई ट्रेड डील के बारे में, या कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है पॉजिटिवली, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है, बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को। ओके, नाउ आपको देखना था which are the stocks that you want to check, because last 5 minutes is remaining. We will check out some of the stocks that you would want to check. अच्छा, before we check out the stocks, we will also check out the heat map from here. यहाँ पर हमारे पास मार्केट वॉच है in our TradingView platform integration, and I would like to just show it to you. ठीक है, now if I go to the futures, I get the most premium. So what I will look at is I will look at the OI मूवर्स। OI मूवर्स में अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे बड़े गेनर्स कौन से हैं, सो चेंज इन प्राइस, OI गेनर्स कौन से हैं। सो यू आर नॉट लुकिंग एट द चेंज इन प्राइस, यू आर लुकिंग एट द OI गेनर्स कि OI चेंज कहां पे हुआ है, बिल्डअप्स कहां पे हो रहे हैं फ्रॉम शॉर्ट और अ लॉन्ग बिल्डअप। तो if we were to mark this is a long buildup, these two are short buildups, right? Because price is going up, OI is going up, price is going down, OI is going up. All right, so this is how the buildups are identified. So from an intraday perspective, you are noticing that BSE is seeing some bit of a value buying after a continuous fall in the last 2 days. Capital market index is also one of the strongest gainers in today's trade, and BSE is up by 2.5%, and the OI is also the strongest build-up here. So you can see over here build-ups are very clearly written: long build-up and short build-up. Okay, so Infosys में again mixed bag, right? Yesterday it was showing positive build-up, today it is showing negative build-up. Essentially क्या मतलब है इसका कि markets are choppy. मार्केट्स आर चॉपी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अगर क्लीन मोमेंटम है कोई स्टॉक में तो वो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाएगा, या एटलीस्ट इट विल हैव मोर अप डेज देन डाउन डेज। इट विल नॉट बी लाइक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। Do I have private classes? The answer is no. I do not conduct any private classes as of now. Okay, so we will look at OI movers, which is the place जहां पे मैं सबसे ज्यादा जाता हूं, बिकॉज उसी से मेरे को मालूम पड़ता है कि भाई कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा मोमेंटम है। लेट्स जस्ट सी अ कपल ऑफ देम। अब मैंने जैसे चार्ट चालू किया यहाँ पे, यू कैन नोटिस दैट दिस चार्ट इज ओनली फॉर द करंट एक्सपायरी, विच इज फेब्रुवरी एक्सपायरी। इसको हम लोग को क्या करना है, यू सी दिस कंटिन्यूस फ्यूचर्स, क्योंकि ये फ्यूचर्स का चार्ट है। You want to, as a technical analyst, you want a lot of data to read through it, right? तो continuous futures जब करते हैं, you get the entire data. You get it for whatever time period it is available from. Got it? Okay. Now, if you look at BSE, it has taken some support here and is trying to move up, right? तो आज का थोड़ा पॉजिटिव बिल्डअप है। तो अगर ये वाला जो लेवल है इसमें, हाउ वुड अ टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेड दिस स्टॉक? ओके, if I were to trade, if I wanted to trade this stock, these are my identified levels, correct? These are the two identified levels in which the BSE stock is trading or ranging. तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, given the positive momentum today and the OI build up,
तो 2837 जो एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किया है, उसके ऊपर अगर ब्रेक आता है, then 2725 becomes the floor, and that is how you would want to trade this stock. No, I do not take any online classes, and I'm very sorry to hear about your losses. If you are making a lot of losses, then I think you should write in to us at support, and we will try and see where you went wrong, and we can try and maybe counsel you or guide you what you can be doing about it. Now let us go back to all indices and constituents. यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, F&O स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नो डेटा अवेलेबल. Nifty 50 में which are the highest? What is this? Why is it doing like this? Okay, so okay, this is, let me see if F&O is coming. Okay, F&O आ गया, चलो F&O आ गया. But can I sort this? I cannot sort this. It is not functioning properly, so let's leave it there. We'll go back to the market watch. We will go to from futures. Let us go to stocks. Stocks में टॉप वैल्यू देखेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, मतलब वैल्यू इन द सेंस सबसे ज्यादा पैसा कहां पे लग रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ transaction that is happening there. Okay, traded value. I'm not looking at volume, because volume अगर करता हूं ना, number of shares traded, एसेंशियली आपको वहां पर आइडिया, सेल, पीएनबी इस तरह के स्टॉक्स दिखेंगे, क्योंकि उसमें प्राइस लो होने के कारण उसका ट्रेडेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिखते हैं. देखिए, अगर मैं देखता हूँ ये पेनी स्टॉक्स जो है ना, इज माई ट्रेप, आइडिया, क्वालिटी, ओला इलेक्ट्रिक, अब तो यार ओला भी पेनी स्टॉक जैसा हो गया है. सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बिल्डर्स दिखते हैं, पीसीजी ज्वेलर्स वगैरह. This is actually not of any use to me. I will look at top value, because this is where I am seeing कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लग रहा है. So this is the more important, turnover कहाँ पे हो रहा है. Okay, so you can see 621 crores in Infosys. BSC is 454 crores. So BSC में आप देख रहे हो, what are you seeing in BSC? Positive momentum build up in the futures side. Price action is also positive, and cash market में भी इसमें बाइंग आती दिख रही है, एटलीस्ट टर्नओवर बेसिस पे, राइट. सो ऑल द डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स सम बिट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डिंग एट लोअर लेवल्स फॉर बीएससी. तो वहां पर हम लोगों ने चार्ट पे भी एक लेवल मार्क किया है, which is our floor for the market for the stock, and if that range is broken, then you will get some confidence कि आप डेटा, कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट का डेटा, you combine it with the price action break, and then you will be able to decide कि हाँ, यहां पर एक प्रॉपर क्लीन सेटअप बनता दिख रहा है. Alright, are we clear with this? Finally, before we close the session, we will just have a look at the broader markets. Markets क्या कर रहे हैं? Alright, and let's go to the 5-minute time frame. So Nifty Bank has recovered. Mid cap is showing some strength. Nifty continues to be in that range, and until and unless 764 level, which is the near-term resistance, it is taken out, there is no clean trend visible in the counter. Yeah, there was RBI news earlier also, which caused BSE to tank. Now I don't know whether there is any clarification that I'm aware of, which is why it could have again moved up. All right, so the broad markets are mildly positive, because आप अगर numbers देखें, it is fairly mildly positive. There is no volume in our stocks in Nifty today. I didn't get that question, sir. Jaspalji. Okay, but I will be, so now what we do is we will close the session today. Let's see the change in Y. 165 calls, 126 puts, fairly even Stevens for Sensex, for Nifty, 434 and 331. Calls are slightly more,
concentrated bet hai near the current market price. So there is not much happening. It's a sideways sort of a market, and it is likely to be that until and unless it gives a clean breakout above 764, which we have marked on the chart. All right, friends. So I will take your leave and I will see you tomorrow at 8:45 sharp. I hope आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. Before I leave, disclosure as per SEBI norms, मेरे पास कोई भी जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जो भी इंडाइसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, उसमें मेरे पास कोई भी सब्सटेंशियल होल्डिंग नहीं है. ऑल माय होल्डिंग्स आर वाया म्यूचुअल फंड्स, and there are no direct clean holdings in any of the underlyings that we have discussed. We have also not shared any trade recommendations or stock tips in the session, nor is that our mandate. हम लोग broad market analysis करते हैं, technical analysis and derivative data reading. All right, so we will meet again tomorrow morning at 8:45 sharp. Please subscribe and click the bell icon so that you get timely notification for these sessions if you find these sessions useful and impactful. Do let us know what more you want to learn, what more do you want to see in these and other sessions by Upstox and Uplearn in the coming future, so that we can design that and bring quality content for our trader friends. कल तक मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye.